आप ज़ोर से बोलेंगे प्लीज़? मेरा ख्याल हर अदाकारा के लिए एक अवार्ड बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, क्योंकि मेरे फ़ैन्स की वजह से ही मैं हूँ और मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि लोगों को मेरा काम पसंद आया, क्योंकि हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि हमारे फ़ैन्स हमें प्यार करें, हमारा काम पसंद करें। तो मेरा सपना पूरा हुआ है और मैं बस बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सबका, मेरे फ़ैन्स का, मेरे परिवार का, पूरी टीम का इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और मैं बस बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज के डे के लिए आपने क्या तैयारी की? स्पेशल क्या किया आज के डे? स्पेशल मैंने तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ आती हूँ। तो ये मेरा अपना डिज़ाइन है, मैंने स्पेशली आज के लिए अपना डिज़ाइन पहना है गाउन का, और आई थिंक दैट इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि आई लाइक टू डिज़ाइन माई ओन क्लोथ्स and I only do that on days which are very very important for me. So my upcoming project is called Roommates for MX Player. Yeah, I also have a show for Netflix called Eternally Confused and Eager for Love, which is being produced by Zoya Akhtar. So Roommates में तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, इनफैक्ट उसमें मैं 2 नहीं 3 रोल्स कर रही हूँ. So that is 3 roles that I'm doing. और इटर्नली कन्फ्यूज्ड एंड ईगर फॉर लव में एक नेगेटिव रोल है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला नेगेटिव रोल है विच आई विल बी डूइंग. सो येस, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि मैं अपने फैंस को और एंटरटेन करती रहूँ, और मैं उनका बस बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी. आज तो मैं बस ये बोलूँगी कि आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया, आपकी वजह से मैंने ये जीता है, और अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होती. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जी बोलो कि सबको बधाइयाँ देती हूँ. पहले मैं बोलता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. सो मैं सबसे पहले इस अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर्स को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे नए टैलेंट को इन्होंने स्कोप दिया है. मैंने काफ़ी नए बच्चों को रैप करते हुए देखा है. उसके अलावा यंगस्टर्स जिस तरीके से एक्साइटेड है रैप करने के लिए. उसके अलावा जो फेलिसिटेशन हुआ, जैसे मिड डे हैं, हमारा ब्रांड है जय भीम ऐप जो यहाँ का को स्पॉन्सर है, इसलिए मुझे लगता है कि सारी की सारी एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है. पीआर क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, और अब चूँकि कोविड के बाद की सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें सारी एक्टिविटी शुरू हुई है, ऐसे वक्त इस तरीके के नए टैलेंट देखकर बड़ी खुशी हो रही है. सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं शॉर्ट वीडियो ऐप जय भीम को रिप्रेजेंट करता हूं, और इस वक्त ऑलरेडी इस ऐप के करीब 2.5 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं. हमारे इस ऐप को 25 दिन हुए हैं, 25 से 30 दिन, लेकिन इस वक्त इसके रेगुलर 500 से 700 डाउनलोड्स हो रहे हैं. उसके अलावा एक्टिव यूज़र्स इसमें 38,000 हैं, और इस ऐप के ज़रिए हम एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं. मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर कि पूनम जी हमारे साथ हैं. पूनम जी भी आपसे कुछ बात करेंगे. हाँ, थैंक यू गिरीश. देखा जाए तो ये बहुत मतलब ऐसा लगता है रिफ़्रेशिंग हो गया, क्योंकि इतने कोविड के टाइम पे हम कहीं जा नहीं पाए और बहुत दिनों बाद एक अच्छा शो देखने को मिला है. और जहाँ गिरीश भाई तो काम बहुत अच्छा ही होने वाला है, ये तो हम इनको बहुत समय से जानते हैं, और आई थिंक बहुत अच्छा नए टैलेंट हैं और एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड बाय पीपल है. और कुणाल है, अपना क्या नाम है, अपने राहुल शुक्ला मिड डे से हैं. मिड डे से हैं, और मिड डे सपोर्ट करे किसी को तो वो शो अच्छा ही होने वाला है. थैंक यू वेरी मच. वेरी गुड. इनको क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के लिए. हाँ, इनके पास क्योंकि क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग है नहीं थी. हाँ, अरे कम मेरे क्या Trishul Presence Tribune and क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लॉर्ड्स ऑफ ट्रेंड्स ना, लॉर्ड्स ऑफ ट्रेंड्स ना, वन ओके. Trishul Presence Lords of Trends 2022. So I am very excited and happy to be part of it, and I really thank Shobit
for having me here. Also Kunalji for having me here. This has been like a privilege to be part of this event. Thank you so much. I think for every woman, fashion is very much her integral part of life. A woman is beautiful when she's having her own sense of fashion, and I think I denote that in my industry. People recognize me as I carry some peculiar style of dressing, and I think fashion every woman must have. Would you like to share something about your upcoming project? Yeah, of course, yes. I'm doing a Telugu project currently, which is called as Mani Shankar, which is on the release. And also I've been doing kind of lot of events. One of the movies called Majdhar. And yeah, a lot of projects in the pipeline. Thank you. What about Netflix OTT platform? I haven't explored it yet, but yes, I was getting a lot of content which was kind of bold, so I'm yet to think about web series which I feel more of content driven rather than just the skin show. Thank you so much. Thank you. Inspirational youth icon. So I guess I'm really happy to have been achieving this, and I just hope that may I continue inspiring people in whatever way I am, and the youth is the tomorrow of the nation, so may we keep spreading good messages to them. You have inspired so many people, so many youth. You have already become a youth icon. Thank How you. does it feel to get nominated like this? It feels amazing. It feels out of the world, I guess, to kind of get this title, because it also comes with a lot of responsibility. So I hope I'm able to fulfill that. And your last song became a super duper hit. Thank you. What is upcoming next? There's another song coming next month, so that's gonna be with Shantanu, and it's coming on Saregama, so you guys have to wait for that, but that's gonna be another amazingly beautiful song, so I hope you guys give it as much love as you've been giving to the rest of my songs. There is something coming up for OTT. I can't reveal much about it as of now, but something very interesting, something very unique that I don't think so has happened before in India. So there's something coming up. Are you following? No, I'm not. I have no idea. I've just seen the trailers, but I literally have no idea. As you said, you watched the trailer. So anything else you like to share? I guess it's a very intriguing show, a kind of interesting thing that people are locked inside a house with nothing to no luxuries actually. So it is an interesting concept, and I guess people are loving it. So And we never saw you any reality show. So what do you want to say about the reality show? And if you get a chance to do any reality show, which will be your first priority? Khatron Ke Khiladi. So I want to get prepared for that. So hopefully next year I might. Thank you so much. Thank you. Thank you. Just fall in. What do you want to say? Sorry, can you ask that again? I feel so happy. I just won the Digital Influencer of the Year award, and it feels great. I'm someone who's very passionate about fashion, so it feels amazing to be recognized in the same sphere. आज के लिए मैंने बहुत ही एक फंकी लुक, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस लुक को पुट टुगेदर करने में तकरीबन 2.5-3 घंटे लगे हैं. Eyes are very very detailed, and I wanted to look very funky. मुझे थोड़ा high fashion cut crease eyes करना था, and even with the hair, I wanted something different, क्योंकि red carpet बोलते usually we keep the hair open and all. I wanted to do something really different, and I was really excited about this award because I'm getting the Digital Influencer of the Year, so feels good. I have 3 web projects coming up, one for Sony Live, I have one coming up for MX, and there's a movie called Incomplete Man. उसके अलावा मेरे 3 ओरिजिनल म्यूज़िक सिंगल्स आने वाले हैं, जो कि मेरे कोलैबोरेशंस होंगे,
एंड बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशंस चल रहे हैं, जहाँ कि मैं इन हाउस फैशन एडवाइज़र हूँ और ब्यूटी एडवाइज़र हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यार सारे ब्रांड्स एंड सारे लोग पब्लिकेशंस रिकग्नाइज़ कर रहे हैं मेरा जो इतने टाइम से योगदान बोल सकते हैं, प्रयास, एफर्ट टुवर्ड्स गेटिंग रिकग्नाइज्ड फॉर माय सेंस ऑफ फैशन एंड स्टाइल एंड ब्यूटी। फील्स गुड। So US came here for International Fashion Week 2022 by LOT. So what do you want to say about it? क्या बोलूँ मैं, I have won Fashion Influencer Award and I can't be more happy because मैं I don't know, मुझे फैशन के लिए चूज़ किया गया एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि फैशन ऐसी चीज़ नहीं है, मैं आई एम स्टिल ट्राइंग, सो आई कैन बी मतलब इंस्पायरिंग टू मैनी पीपल कि जब ये गर्ल फ्रॉम नेक्स्ट डोर एक फ़ैशन इन्फ्लुएंसर बन सकती है एंड शी कैन विन द अवार्ड फॉर अ फैशन इन्फ्लुएंसर, तो आई गेस कोई भी कर सकता है। Okay, so you always been a youth icon. You came up with so many songs. So would you like to share some of your upcoming projects and how does it feel to be a youth icon? I feel privileged, of course. 10 million फॉलोअर्स मैंने अभी कंप्लीट किए एंड बहुत ही ह्यूज है मेरे लिए, जो लोग प्यार देते हैं बहुत बड़ी बात है। और जो मेरे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसमें बहुत सारे, अभी दुबई जाके हम लोग शूट करने वाले हैं, मेरे बहुत सारे सोलो सॉन्ग्स आने वाले हैं। आई हैव शूटेड 3 to 5 सॉन्ग्स, अभी तक मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ, जो अप्रैल में आएगा। मेरा एक शो आने वाला है जो भी अप्रैल में होगा, रिलीज़ होगा, जो ऑलरेडी शूट हो चुका है। एक वेब सीरीज़ की और बात चल रही है जो कि मे बी नेक्स्ट या नेक्स्ट मंथ शूट शुरू होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइंड अप, लेट्स सी। Okay, so is there any upcoming song with Bhavin and Vishal? वी एक्चुअली अभी भावेन और विशाल के साथ नहीं है, हम लोग दुबई जाने वाले अभी, मे बी नेक्स्ट वीक एंड देन विल शूट, बट और बहुत सारे एक्टर्स के साथ मेरे गाने आने वाले हैं अभी, मे बी नेक्स्ट मंथ तक आ जाए। थैंक यू। वेरी स्पेशल इवेंट और बहुत अच्छा लगा मुझे आकर यहाँ पर। अभी कुछ शेयर नहीं करूँगी, देयर इज समथिंग हैपनिंग जो मैं आप लोगों के बीच में जल्दी शेयर करूँगी, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, बट इतना हिंट दे देती हूँ दैट यू आर गोना सी मी इन वन ऑफ माई सॉन्ग्स नाउ। OTT पे भी काम करेंगे यार, OTT अगर अप्रोच करते हैं किसी पर्टिकुलर रोल के लिए जो मेरे लिए अच्छा है, आई वुड लव टू डू इट, आई एम ओपन फॉर इट। ठीक है, थैंक यू। Thank you. I'm so happy that I'm here, and every time I get fresh new face. I don't know why, but I'm so grateful and thankful that I'm here, and the event is really nice, and I'm happy to receive this award. And it's a fashion week, so how important do you think fashion? Fashion is very important, yaar. मतलब you should not go out without dressing up, and you should carry yourself with a confidence. I feel confidence is the key. अगर आप confidence हो तो you can wear anything, you will look good. My songs just released 2 days back, and उससे पहले भी there are so many songs, 3 songs released, and I'm doing a film in South which is I'm shooting right now, and I'm shooting for 2 more songs. So these all are things. Yeah, I just did a short film yesterday. It got released, Chupi Diaries. So please go and watch it, guys. Chupi Diaries on Sky 247. Thank you.
What do you want to say to your fans who have supported you more than 3 years? It's been a very simple journey for all of us. In July, it will be 5 years touching. And this journey wouldn't have been possible without the support, encouragement, blessings of the viewers and viewers. Thank you so much. Thank you so much. What do you say about the event? I think Shobit and Kunal, the Lord of Trends, have done a wonderful job by inviting a lot of new talent, a lot of new fashion designers, and I've seen some clothes and some models who are very enterprising, very promising. So I'm sure we're going to have lots of big stars coming out of here, and hopefully, and crossing fingers. And it's a fashion week, so how important do you give to the fashion, and what kind of fashion do you like to wear wherever you go for a party? Because I'm a jeans man, so I generally am into jeans, but yes, there are a lot of lovely clothes which I saw, and they made me feel that I should really wear them. So it's wonderful to see a fashion show, and lots of various designers which Shobit and Kunal have got together, put them together. So I think it's a very good venture, and I wish them a lot of luck. I am going on floor from the 19th with a film called Tipsy, which is 5 girls in that, and they're just going on an adventure trip. One of them is getting married, so they're going on a bachelorette, and then things happen over there which are a little critical and adventurous for them. So it's fun film. So would you like to name those girls, 5 girls? Yeah, of course. I mean, there's Natasha Suri, there is Nazia Hussain, then there is Alankrita Sahai, then we have Sonia Birje, and we also have Kainat Arora. So each one of them are, playing entirely different characters, and it's exciting to, go on floors now finally. I'm not. I'm directing the film. Okay. So what about OTT platform are getting into the trend of the film market? What do you want to say about the OTT platform? Well, it's an exciting place to be. OTT is coming out with some wonderful series, और वर्ल्ड सिनेमा वर्ल्ड सीरीज़ देखने मिलती हैं आजकल बैठे बैठे घर में, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग. सो आई गेस OTT इज़ स्टिल ग्रोइंग. हमारे इंडिया में तो अभी भी बहुत ग्रो हो रहा है. अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोग उस मकाम पे पहुंच गए हैं, बट मैं समझता हूँ कि बहुत चैलेंजिंग है और बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम सिनेमा पे नहीं बना सकते हैं, वो हमें मौका मिलता है OTT में बनाने का, लोगों तक पहुँचाने का. So I think it's a wonderful platform, and it's giving so much work to most of the people in the country today. So I am looking forward for a lot of OTT to grow now. Thank you so much. Thank you guys. Thanks a lot. What do you want to say about it? First of all, congratulations, sub awardees ko and sub winners ko, and I think it's going to be a great event, and I'm very happy to be here. What do you want to say about that project? So there's nothing to say about that project. It released. It was a huge hit for 2021, and we are all very proud. And Rohit Shetty ने अपना कमाल फिर से दिखा दिया, so we're very happy. Would you like to share about your upcoming project? I am doing one film. It's with Action Hero Films with Vidyu Jamwal. It's a Reliance T-Series production. And so how excited are you working with this? I'm very excited. It's going to be an action film, and I'm very happy to be a part of action films. And आप रैम्प को करने वाले हो, आप रैम्प को हो रहा है. Would you like to? Have you ever done rams? Yes, I've done ramp shows before, but today I will be given an award, so I won't be walking on the ramp. Thank you so much. Thank you. Hi. International Film Week 2022. What do you want to say about it? About About the event?
I think it's a wonderful evening. It feels good to be back at events now. Thanks that finally the COVID wave does not show up anymore. But I'm really, really grateful and thankful to be here and wonderful people. Thank you. And you just won an award. Tell us something about it. So this is my award for style again. You want me to show it? Yeah. This is again like for style. I'm very grateful that I have some amazing people who dress me up well. So a big shout out to all of them. Thank you. Okay, so you have been collaborating with so many actors in your dance. Is there anyone would you like to collaborate in future and yet you have not collaborated? I just recently shot with Alia. I think that was one good collab that happened. I think I don't pray and wish, but maybe Hrithik Roshan someday. Any upcoming collaborations? I think there are a lot that is happening now because everything started back. So it's better not to say because I learned this that every time I say things and they don't happen, I get like a little worried. So I've tried not to like over reveal things. And what do you want to say to your fans who always love the collaboration? To all my fans who love my collaboration, thank you so much for always supporting. Thank you so much for always loving. And thank you so much for everything. So you just said you have collaborated with Alia and Alia came up with a good movie, The Goodbye. What do you want to say about it, the movie? The movie is fabulous. I watched it on the first day. Alia is great. She's done a great job in the film. And she's wonderful anyway. So I'm very, very happy that I love Gangubai. Thank you so much.